Hello, my dear friends. I'm going to start the chapter Living World. When we try to define living, we simply understand that what is living as a opposite to the non-living. First, this is we are going to deal this chapter in a very short time and in very short notes. Now, there are some unique features of the living organism such as growth, reproduction, ability to sense environment, metabolism, ability to self-replicate, self-organize and interact. There are some features like growth, reproduction, metabolism, consciousness, cellular organization, and the defining characteristics are there are two defining characteristics and three are defining. And this one thing you have to remember that this all five features are characteristic but defining are only three, that is metabolism, consciousness and cellular organization. So seen in growth, seen in both intrinsic and intrinsic in living and non-intrinsic in, that is extrinsic in non-living. Now living organisms, but some exceptions are seen in infertile human couples, mules and sterile worker bees. And metabolism seen in all unicellular as well as multicellular organism, means there is no exception to metabolism. Now consciousness seen in all unicellular as well as multicellular organisms, only human is self-consciousness. Cellular organization seen in other all unicellular and multicellular organisms. Now, reproduction is synonymous with growth. Reproduction is synonymous with growth in unicellular organisms, but in multicellular organisms. Now, a reaction is in test tube is neither living nor non-living. This question has maybe asked in NEET that the reaction in the test tube is. So this is neither living nor non-living. Now, photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. Now, in planaria flatworms, we observe true regeneration. This is very important question. This has asked many times in NEET. Now, properties of tissues are not present in constituent cells. Similarly, properties of the cell organelles are not present in the molecular constituent of the organelles, but arise due to interaction. This can be asked in NEET. The patient lying in coma has no self-consciousness. Now, all living organisms, present, past, future, are linked to one another by a sharing common genetic material but to varying degrees. This can also be a good question in NEET. Now, living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Now, I hope that you are getting these points. Now, diversity in the living organisms. Biodiversity is the number and types of organisms present on the earth. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. Remember, this is million, not billion. Okay. Now, as local names vary from place to place, there is a need to standardize the name of living organisms. The process is nomenclature, by which we give name to each and every organism. Now, before nomenclature, identification should be done. Identification is the main step. Now, scientific names are based on agreed principles criteria which are provided in ICBN. This has asked in it International Code of Botanical Nomenclature. Please remember this. This has asked many times in NEET. Now, for plants, it is for plants, and now for animals, ICZN, International Code for Zoological Nomenclature for Animals. Now, the most accepted system for naming of organism is binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus. This has asked in it. According to this, each scientific name has two names, the generic and specific epithet, and generally in Latin. This is really very important question in NEET, that scientific names are generally in Latin. Don't write it, don't remember this in Greek, it is Latin. Now, this has asked in NEET 2019 that nomenclature of mango is Mangifera indica Linn. This has asked in NEET. Now, genus starts with capital letter and the species starts with small letter.
capital letter, small letter. Now scientific name should be printed in italics. Remember, it is italics. If handwritten, should be underlined separately. Name of the author should be at the end of the biological name in abbreviated form. Now classification. The classification is process by which anything is grouped into convenient categories. This you know. Now the scientific names of these categories is taxa, that is dogs, cats, mammals, plants. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process is called taxonomy. Taxa can indicate categories at very different levels. Example, animals, mammals, and dogs represent taxa at different level. Taxonomy in evolutionary relationships is equals to systematic. This is very important question in NEET. Systematics consist of what? Taxonomy including evolutionary relationship. If there is no evolutionary relationship, it is only taxonomy. But if you include this, it is equals to systematics. Now, basis of modern taxonomic studies. There are some basics, for example, morphology, anatomy, cell structure, development process, and ecological information. Now, our basis of taxonomy: categorization, identification, classification, and nomenclature. Now, taxonomic categories. Each step in classification is called category or rank. Now, taxonomic hierarchy. As it is a part of taxonomy, hence called taxonomic category, and all the categories constitute taxonomic hierarchy. Now, there are 7 obligate categories. And here, unit of classification is rank or taxon. Now, the most important table of this chapter is this: organisms with their taxonomic. Here I have made one trick for this to learn, that is, I have made trick kingdom for कप को फंगस. ऐसा होता है ना, कप को फंगस लग जाता है, तो उस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको, कप को फंगस. और ये याद करना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में डायरेक्टली इस ऑर्डर पे बेस. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस. और उस यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग किस चीज़ के बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं, तो उसको याद रखना है. हम लोग फ्लोरल कैटेगरीज के बेस पे कैरेक्टराइज करते हैं, और फैमिली को हम लोग वेजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे हम लोग उसको कैरेक्टराइज करते हैं. ये ज़रूर याद रखना ना. ये टेबल एक बार पढ़ लेना. ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बहुत सारे, इनने 4 का दिया है, बस अभी इतना याद रखना है यूनिट में जितना आता है. मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया है, फाइलम है कॉर्डेटा. ये आप अच्छे से लर्न कर लेना. नाउ एक ये भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है क्वेश्चन. इसको तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी से याद कर लेना कि जो सोलानेसी होता है उसका जो ये होते हैं, क्या होते हैं, जो भी इसके जीनस होते हैं, सोलेनम है. सोलेनम में कौन कौन आता है? धतूरा, पिटूनिया, सोलानेसी. और जो ये फैमिली है उसमें 2 फैमिली आते हैं, सोलानेसी प्लस कन्वोल्वुलेसी. ऑर्डर्स में पॉलीमोनियल्स और सेपेंडियल्स आते हैं. क्लास में डाइकोटिलेडनी या मोनोकोटिलेडनी, एंड फाइलम में एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी, एंड किंगडम में प्लांटी. ठीक है, ये याद रख लेना अच्छे से. यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. नाउ, वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव फ्रॉम, मैंने तुमको पहले भी बताया था, इसका नाम था लैटिन वर्ड सिस्टमा, which means systematic arrangement of organisms. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जितना ज़्यादा कैटेगरी के ऊपर हो गए आप, ठीक है, जैसे मान लो किंगडम में हो गए, तो उतना ही बहुत डिफिकल्ट होगा आपको उसमें रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, क्योंकि उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम मिलेगा. लेकिन जैसे जैसे लोअर में चलते जाओगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलते जाएंगे. और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, ये टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि 8 टाइप्स के होते हैं. तो मैंने इसको एक लाइन से किया है. नाउ, दिस एड्स आर प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़. फर्स्ट इज हर्बेरियम. यहाँ से देखो क्वेश्चन आते ही आता है, एक एक लाइन से आता है. दिस इज स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस पेस्टेड ऑन शीट्स. ईच शीट कैरीज अ लेबल which has information of specimen. Now, flora provides the index of the plant species found in a particular area.
Now, botanical gardens have a collection of living plants for reference. Each plant is labeled. Largest botanical garden at Kew, England. ये नीट में कई बार आ चुका है, तो प्लीज़ इसको लर्न कर लेना. Indian Botanical Garden in हावड़ा. Now, monograph. Monograph contains information of only one taxon. NCERT में इतना ही लिखा है, तो प्लीज़ उसको इतना ही याद रखना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फिर यहाँ पे आता है कीज़. यहाँ से देखो, इसके हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है. Keys are analytical in nature, based on contrasting characters, generally in paired and couplet. Based on similarities and dissimilarities, each statement is called lead. देखो की का जो हर एक स्टेटमेंट होता है ना, उसको हम लोग लेड बोलते हैं, तो ये ज़रूर याद रखना. नाउ म्यूजियम जनरली सेटअप इन स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. ये तो पता ही होगा आपको, उसको लर्न कर लेना. हाँ, वहाँ पे ये भी एक बार क्वेश्चन आया था नीट में कि क्या वहाँ पे फोटोग्राफ्स होते हैं, तो नहीं, हम लोग वहाँ पे फोटोग्राफ नहीं रखते हैं. वहाँ पे हम लोग ओरिजिनल चीज़ें रखते हैं जो डेड होती है, ठीक है. और वहाँ पे ऐसा नहीं है म्यूजियम में हम लोग सिर्फ एनिमल को रखते हैं, एनिमल प्लांट सबको रख सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन प्लीज़ मत रखना. यहाँ पे लिखे हैं ना, लार्ज एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड. देखो, प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें दोनों होते हैं, हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट होता है. नो मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया. जूलॉजिकल पार्क तो आपको पता ही है. सो हियर दिस चैप्टर्स इन